बट पता है रियलिटी में बताऊं, बहुत सारे लोग तो आज भी गजल का ग नहीं बोल पाते हैं। पहली बात तो वो है, वहां से स्टार्ट नहीं होता है। पहली बात तो वो है, दैट इज सो ट्रू। हमारे बचपन में ही होता है गजल का ग, ग नहीं ग, और ऐसा एंड मैं बोलता था यार ये इसका स्टार्टिंग ही ऐसा होगा तो आगे लोग इट्स अ वेरी नीश। हैज इट बिकम मोर वाइड स्प्रेड नाउ, या अभी भी बहुत कम सिंगर? अभी है, better than what it was a couple of years ago तक. It's gotten better, but yeah, it is still a niche. और महफिल जमाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। हो फ्रीडम गैराज। मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे कुछ ऐसे दोस्त है जिनको मैं इतना कम मिलता हूँ, और कई बार जब मिलता हूँ सोशल मीडिया पर तो ऐसा लगता है जैसे रोज मिलते हैं, लेकिन जब मैं इनसे मिलता हूँ तो मुझे लास्ट टाइम मेरे को याद है हम लोग या तो कभी जिम या एयरपोर्ट। The wonderful voice of Shruti Pathak now in the face and in the person in my studio. Thank you so much for join करने के लिए। Absolutely excited. But मैंने जो बोला बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। या जिम या एयरपोर्ट। Social media has reduced social interaction. That is true. रियल वाली। मुझे लगता है कि लोग को पता है एक दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है। लोग विश भी करते हैं अगर बहुत बड़ी चीज होती है, बट लोग अब मिलने से कोई रीजन नहीं ढूंढते, क्या करेंगे मिलके। हाँ, क्योंकि सबको एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है। यू आर मतलब आज दोपहर में क्या खाया वो भी पता है। बट आई डोंट पोस्ट सो मच। नो, मी टू। आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, बट हाँ, पर पता सबका रहता है बिकॉज जो लोग पोस्ट करते हैं उनका मैं देख लेती हूँ, सो आई एम अपडेटेड। उसमें फोमो होता है अगर कोई कुछ ऐसा कर रहा होता है या फिर नहीं कर रहा होता है? बहुत रेयरली फोमो होता है, यूजुअली इट्स जोमो बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन, या वर्क वाइज। लेकिन कई बार होता है क्या आई सी, ये पता क्या हो जाता है लोगों का, दिस न्यू इंडी ट्रेंड वाज समथिंग दैट आई थिंक स्पार्क्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे लोगों ने देखा कि बहुत सारे आर्टिस्ट, so for years people were trying it, but there was one particular production label that was doing a lot more than the others, right. And I remember एक बादशाह पाजी ने एक बहुत रिवेंज कमबैक किया था अपना, जुगनू है ना, and then he started like massive, उसका और निकिता का चलते ही चले गया था, and there are a lot of others also. The 2020 में started a lot. Now has it reached a stage जहाँ लोगों को लगता है कि अब मैं ये कर सकती हूँ और मुझे अगर मैं दूसरा करूं या ना करूं उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब इवेंट्स और शोज भी इस पर मिल जाते हैं। Have you reached that stage with all artists या फिर only a few? Only a few. अच्छा। As yet. Okay. As yet. Definitely 2020 लॉकडाउन से जो एक वेव शुरू हुआ है of independent music and you know artists from any and every corner of the country, like they've got the platforms to you know, put their music out. Correct, and you don't have to depend on a label. Correct. Or you don't have to depend on a film, you know, or someone to promote you. You know, you can just be in the comfort of your home and you know put your music out. I think that has made everything very easy, and a lot of artists have literally emerged out of Correct. Nowhere in last 2 years, 3 years. You know, Correct. So it's a great thing. But for artists like you, for example, is it tougher क्योंकि बड़ी फिल्म आ जाती है, मर जावा आ जाता है, सब लोग जानते हैं ये, इज इट जैसे वही होता है ना, जैसे जब मुझे याद है जब लोगों ने मुझसे बोला था तुम फिल्म और टेलीविजन छोड़ के जब रेडियो आए हो, उनको लगा था ये कम डाउन था। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बट बाहर के लोग ऐसे नहीं मानते थे। समटाइम्स डज दैट आल्सो हैपन विद यू एज एन आर्टिस्ट? या ऑफ कोर्स, आज भी लोग पूछते हैं कि अरे अगला गाना कौन सा है, तो यू विल से कि ओ आई जस्ट रिलीज्ड एन इंडिपेंडेंट सिंगल and they'll be like नहीं पर फिल्म का गाना क्यों? तो like that thing is still there because you know for the जनता, for them like films are a big of course and actually the only validation कि अगर बंदा अच्छा कर रहा है तो वो फिल्म ही कर रहा होगा, you know, or for that matter films are a very essential and a very big part of our lives in this country, and music is a very big part of the films. So hence that connection is there. And पहले ऐसे होता था कि if you want to become a singer you have to be singing for films. Correct. पर अब ऐसा नहीं है, you know, and I think the audience is also being open to it, especially the current generation जो है। यार उन्होंने तो ऐसी फैन फॉलोइंग बना रखी है बहुत लोगों की, unreal, which is great, you know, why not? Because back in the 90s there was this era of independent music in India, which was as good as a film celeb, you know, like all the शिवानी कश्यप अभी तक इतने शोज करती है। Exactly, all that one song, right? हो गई है मोहब्बत अभी तक चल रहा है। Exactly. So when you talk about 90s music, you will come up with these names, you know. तो वो एक था। I think we are getting there. अभी भी है थोड़ा सा, like we are still not there yet, but what is good is last 3 years has helped independent music a lot.
एंड श्रुति इज मल्टी टैलेंटेड, चाहे वो गजल्स की बात हो, चाहे इंडी म्यूजिक की बात हो। आज जो जिस गाने की हम बात भी करेंगे वो तो होगा ही, बट ऑन दिस चैट कैन यू इमेजिन देयर इज अ गर्ल आई रिमेंबर, अनामिका, जिन्होंने एक कैटवॉक गाना किया था। 30 साल तक ना दिल्ली में वो वही गाना गाती चली गई थी, एंड शी हैड सो मेनी शोज। और मैं बोलता था इसके बाद कभी कोई गाना आया नहीं है, कहती नहीं। और शायद यही पावर है उस जमाने की और उस मेमोरी की कि आज भी हमें याद रहते हैं। सो दैट्स व्हाई इवन श्रुति नाउ आल्सो यू विल से मर जावा, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और एक तरीके से एक समय पे उन्होंने एक आरजेइंग टाइप भी की थी जब गजल्स की बात की थी, एंड वन वुड नेवर थिंक अ श्रुति पाठक दैट वाज सो फेमस फॉर हर मरजावास is also a beautiful ghazal singer, and now Karmawali is a new track that has come out indie music mein. Thanks so much for joining me. Thank you, Salil. It's been long pending and finally. हाँ, हमारे WhatsApp पर चलते रहे next week, Monday, Tuesday, next week. True. But ये ghazals की जर्नी तुम्हारी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? Because you know, it's a tough act to do. कई बार क्लासिकल ट्रेनिंग वाले लोग आते हैं, वो क्लासिकल म्यूजिक आ जाते हैं, but ghazals को मास्टर करना is a little tough. I think ghazals is a very different form of singing. You know, actually, it's the wrong way to put it. It's not a genre of music; it's a genre of poetry. Right. You know, so poetry is the biggest essence in this format. You know, and अगर आपने अच्छा गा भी लिया, पर अगर आप पोएट्री में थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, correct, और it will change the meaning of what correct, the song is, right? Correct. So it's a very important one. And the style of singing is also very different, unlike the semi-classical or a classical music. You know, it has a very different flavor. तो मैं तो honestly मेरे घर में ये माहौल होता था बचपन से. My father used to listen to a lot of ghazals, right, and from the very early age on, you know, Jagjit Singh forever, Jagjit ji, Mehdi Hasan Saab, गुलाम अली जी, you know, बेगम अख्तर. तो घर में ये म्यूजिक चलता था, and my father is the reason why I sing. You know, he introduced me to music, different genres, classical music. बचपन में स्कूल बंक करवा के वो मुझे क्लासिकल कॉन्सर्ट्स में लेके जाते थे. Fabulous. अरे पढ़ाई छोड़ो, तुम गाना सुनो. तो हम good thing you became a good singer, huh? Absolutely. Oh, he would have. उनको बहुत दर्द होता. जबकि हमारे घर में एजुकेशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. सो बिकॉज ऑल माय अंकल्स आंटीज सब लोग प्रोफेसर्स और टीचर्स हैं, सो पढ़ाई भी उतनी इम्पोर्टेंट थी. तो पापा taught me music from बचपन से कि नहीं ये सीखो, ये सुनो, you know, global music. But ये भी बहुत जरूरी है. Then you have become a more rounded performer. Absolutely. But because very early on he realized that I have a good voice and I do have the musicality in me. And he wanted to cultivate that, you know, because he was such a big music lover. So he's like, ये genes में जो आया है, let's cultivate it from the very beginning. So that's how ghazals घर में बहुत सुनती थी मैं बचपन से. But were you nervous when you were actually doing it professionally? Oh, absolutely. And I started singing ghazals at you know, at a time when back-to-back major hit songs were coming in. And not that I was not happy and excited about it, of course, like it was thrilling, you know, because as I mentioned earlier that in India independent music का scene तो वैसे था नहीं as such. Bollywood main था. So you know, you're super stoked about it कि you know, Bollywood के इतने बड़े फिल्म में इतने अच्छे गाने आ रहे हैं. पर एक कहीं ना कहीं एक हर एक आर्टिस्ट का एक अंदर से जो एक सोल craving होती है ना, it was for me that was ghazals. And I wanted to. And when it came out with the response, what did you think? Oh, I think it was great. But did they say that ये कैसे? Yeah, everybody was like, "Arey, ghazals." And some of them also thought that probably it was not the right move at that stage of my career. But then I was like, no, it's just music. Music cannot be confined to a film or a song or a genre or language for that matter. They also must also say that, you know, ये थोड़े seniority पर होना चाहिए. Yeah. ये भी शायद, correct me if I'm wrong. क्योंकि at that time it was like, तुम गजल गाओगी तुम्हें कौन seriously लेगा? You know, and also I think there's a very, it's a notion that people think ghazals are sad and you know, रोना धोना होता है, पर जो कि है नहीं, you know, like you listen to a Ahmed Faiz ghazal, if you read that poetry, it talks about several other things, you know, it talks about the society जो हो रहा है, you know, it's beautiful, like it's beyond sadness. And but पता है reality में बताऊं, बहुत सारे लोग तो आज भी
गजल का ग नहीं बोल पाते हैं। पहली बात तो तो वो है, वहां से स्टार्ट नहीं होता है। पहली बात तो वो है, that is so true। हमारे बचपन में ही होता है गजल का ग, ग नहीं ग, और ऐसा मैं बोलता था यार ये इसका स्टार्टिंग ही ऐसा होगा तो आगे लोग इट्स अ वेरी नीश। हैज इट बिकम मोर वाइड स्प्रेड नाउ, या अभी भी बहुत कम सिंगर? अभी है, better than what it was a couple of years ago तक. It's gotten better, but yeah, it is still a niche. महफिल जमाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, I guess, obviously. And for that, like the audience is usually a certain bracket, age bracket, yes. Right? क्योंकि वो समझने, वो डेप्थ समझने के लिए, वो पोएट्री को समझने के लिए वो मैच्योरिटी चाहिए, जो कि यूजुअली मैं एक्चुअली इन गजल कॉन्सर्ट दिल्ली डज अ लॉट ऑफ दिस। दिल्ली में बहुत होता है, कुतुब वाले एरिया में बड़ा होता है, जहाँ कुतुब मीनार पीछे होता है, बहुत अच्छी सेटिंग हो जाती है। बम्बई में मुझे लगता है थोड़ा कम है। That is true. That is true. Also because I think Bombay is a very cosmopolitan city. तो बहुत अलग-अलग एज ग्रुप्स, क्योंकि लोग अपने करियर बनाने यहाँ पे मोस्ट रेजिडेंट्स से ज्यादा there are, you know, people who have migrated here. Yes. So I think that could be one of the reasons that Bombay still is not there yet when it comes to this form of poetry. But it's starting to increase, and I love the fact that she says poetry over and over again. और ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है। लेकिन अब पहले मैं ये जो गाना सुनाऊंगा, कर्मावाली, this is not poetry at all. This is a beautiful indie track. और बहुत सारी चीजें from the very thought process of even the thumbnail of the song with a beautiful artwork which we'll talk about. बस अभी ये गाना सुनेंगे और उसके बाद we'll talk about the track. Right here, Radio City 91.1 पर, Freedom Garage पर, this brand new track by Shruti, which is of course an independent track. Who are the people that are involved in writing this, lyrics and all that? So Youngveer, जिन्होंने ये गाना लिखा है, he's a beautiful writer, पंजाबी में उन्होंने बहुत अच्छे गाने भी लिखे हैं, and you know, कर्मावाली, नो कर्मावाला ले गया, तो even that's a very poetic way of putting how soulmates end up together, you know, और इसे अनमोल डैनियल ने कंपोज किया है, it's a great composition. And what a lovely name, Anmol Daniel. Yeah. I love that. पहले गाना सुन लेते हैं, then we come and talk a lot about it. Sure. Shruti Pathak in the house with me on Radio City 91.1. गजल गाती हैं, अभी इंडी म्यूजिक आपने इनका सुना, कर्मावाली जो आगे जिसकी हम चर्चा करेंगे, बॉलीवुड में तो है ही, और परफॉर्मेंसेस इतनी सारी देती हैं. You see, you know, very few all-round artists रहते हैं, and she definitely is one of them, and she's been there for a while now. I love it. Current दुनिया में fan following वाले बहुत सिंगर हैं. Of course. बहुत उन सिंगर्स को मैंने स्टेज पर गाते हुए सुना है, नहीं जमता मुझे। एंड आई थिंक दैट ऑल्सो ऑर्गेनाइजर भी बोलता है कि यार ये वाओ पब्लिक है, ये खटकती है बात जो स्ट्रॉन्ग सिंगर्स रहते हैं, कि क्योंकि वो जस्ट बाय द जनरेशन वो है, वो लास्ट 2-3 इयर्स वाले उनकी जो फैन फॉलोइंग बन गई है, एंड इट्स जस्ट हिट द रूफ। बट आपको कहीं ना बात कई बार खटकती नॉट ऑन अ पर्सनल लेवल, बट इट्स मोर लाइक व्हाट आर वी passing on to the next generation. Correct. You know, because it's our responsibility as an artist. You know, हम लोग जो बचपन से गाना सीख रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, इतना genres explore कर रहे हैं, we are constantly trying to push the envelope and do better. कभी-कभी कुछ आर्टिस्ट को सुन के ऐसे लगता है कि यार, you know, it's unfair. Yes. You know? Yes. And it's not just unfair to us, it's unfair to the music. Correct. You know, और हम आगे They make family produced tracks, लेकिन जब वो reality में गा रहे होते हैं तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है. Absolutely. And you know, फिर जो लोग उनको idolize करते हैं, जो जनता जो उनको सुनती है, उनको लगता है कि ये इतना काफी है. You know, and that's where I think उनको मेहनत करने की उनको लगता है जरूरत नहीं है. You know, you produce a track well, you auto-tune the vocals, and you think that's going to work. It might work for a year, 2 years, 3 years, but it's not for a long run. You know, correct. Music is vast, and there's no enough in music. सोशल मीडिया में पकड़े भी जाते हो, अगर कुछ गड़बड़ होता है कहीं ना कहीं कोई परफॉर्मेंस में आ जाती है। बिल्कुल one clip can ruin all the 3 years we have seen lots in the last 1 or 2 years months only, you know, but क्या बोले। Karmawali, let's talk about Karmawali. Yes. So what's this association like, and what's the plan with the indie music scene for you now? I think indie music is something unlike the film music. Indie music is something that reflects
your soul, you know, something that you want to do, like how I wanted to do ghazals, and I've been doing that for a while. So with independent songs, you know, there are certain kind of songs, there are certain kind of poetry that you don't get to do otherwise, which you have your own opportunity and the platform to do it. So I think Karmawali is one of those. But अभी ये फैक्ट्री चालू करनी है कि नहीं? फैक्ट्री तो नहीं, I will not call it factory because मुझे ज्यादा भी नहीं करना है कि you know, छापना नहीं है. You know, it's a creative process, and I want to enjoy creating each and every piece for a reason, for an audience. Like how Karmawali, I think, is a song for every bride to be. You know, it's a very beautiful, hopeful. And I like the creatives that have gone with it also. Very well thought out. Yeah. कि वही जैसे पुराने जमाने में काफी समय लगाया जाता था म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए, थंबनेल के लिए, राइटिंग के लिए, अच्छा था. The team is quite sorted. You yourself also, by the way, are a great entrepreneur. You know, श्रुति के एक जूते की collections हैं जो खुद वो डिजाइन करती हैं. You design yourself, right? Yes. It is so cool. Thank you. और like I said, you're many facets to that one performer also. I think I'm just I'm not somebody who will be content with like एक ही चीज करनी. हाँ, एक चीज करके या इतना करके मैं खुश हूँ, वैसी नहीं हूँ. I like to do more things. Anything that interests me, I go all in. You know, it's just how I am. Like actually, how my footwear label, it's called Juft. Yes. 2021, the second lockdown, I was like 2020 में तो काफी हम लोगों ने Netflix और chill कर लिया. 2021, I was like, I cannot watch anything more and waste my time, and still music had not picked up again. We were not going out of the house, not visiting studios, not even traveling for gigs. I was like, I have to do something meaningful, something concrete. So yeah, I was online studying footwear design. Wow. And then I was like, okay, now that I know a little bit about it, I can. But they're damn cool, yeah. Thank you. And अच्छा kickoff you. I remember first I thought you were just endorsing the brand. फिर मेरे को बाद में मैंने कहा वाह यार ये तो बहुत कमाल की बात है. Are you a good business person? Yes, I'm a Gujarati. ये ऑनलाइन की दुनिया में if you got a good product, actually बिक जाता solid? Yes. Okay. It definitely requires a push also because people need to trust the brand. And that can only happen with, you know, integrity and marketing. तो अभी तो खैर पूरी दुनिया खुली हुई है. I'm loving the fact that, you know, like I said, so many new facets to your personality. Thanks again for joining after 1,000 years. Thank you. बहुत अच्छा लगा मुझे. और श्रुति पाठक के जो आप Instagram पर जो है ना कुछ उनकी दुनिया आपको मिल जाती है. But like she said, slowly lot more independent tracks will also be coming out. और ये जो घंटा है ना इसमें मैं कुछ एक गजल भी उनकी सुना दूंगा, बिकॉज आपको ये समझना चाहिए, यू नो व्हाट काइंड ऑफ सिंगिंग एक्चुअली गोज इनटू इट. और जैसे कि इन्होंने बड़ी क्लियरली बोला, इट्स पोएट्री, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्री. तो ये भी बड़ा अच्छा लग जाता है. और आज भी लोग ये बोलते हैं ना, इन देयर माइंड अगर वो सोचें श्रुति पाठक इज नॉट इक्वल टू गजल, तो ये जो क्लिशे है उनके दिमाग में, इसको भी कई बार तोड़ने की जरूरत है. और तभी मैंने सोचा है कि we will also make you listen to that. So thanks Shruti for joining me. Thank you. It was wonderful. Radio City.